नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. वेलकम टू Kashyap's Academy. Dear students, this is the next formulas of the trigonometry. और ये करने के बाद then we will be doing all the combined problems of the trigonometry. These are called as factorization. These are called as defactorization formulae. बहुत सिंपल है. If you have to add the two signs, means sin c plus sin d, it will be 2 sin c plus d by 2 and c into c minus d by 2 into cos c minus d by 2. ये हमेशा है c plus d by 2 c minus d by 2, c plus d by 2 c minus d by 2. या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. तो नेक्स्ट में आपको आएगा sin c minus sin d, it will be 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. अब यहां पे क्या होगा, ये sin sin के लिए एज इट इज sin c plus sin d, sin c minus sin d, sin cos 2 तो एज इट इज sin cos. यहां पे c plus d by 2, c minus d by 2, c minus d by 2 एंड c plus d by 2, कितना ही चेंज है. sin cos तो वैसे ही है, पहले साइन में यहाँ पे c plus d by 2 फर्स्ट एंगल, ये c minus d सेकेंड, एंड sin c minus sin d में c minus d by 2 इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. cos में cos sin cos c plus cos d, जब आप cos c plus cos d कर रहे हो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 एंड cos c minus cos d में -2 आएगा यहाँ पे sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. अगर माइनस अंदर जाता है, माइनस गोज इनसाइड यहाँ पे, देन c minus d will become d minus c by 2. ये एक ध्यान में रखना है. देन sin of a plus b plus sin of a minus b 2 sin a cos b. You can expand this also, sin a cos b plus sin a cos b plus sin a cos b minus sin a cos b 2 sin a cos b. Sin of a plus b minus of sin of a minus b sin a cos b plus cos a sin b minus in bracket sin a cos b minus cos a sin b minus जाएगा 2 cos a sin b बच जाएगा. In this way also you can elaborate this. कि अगर नहीं आता है तो आप रफ में उसको पट करके सॉल्व करके फास्टली you can find out these formulas also. These are called as factorization, those are called as defactorization. Yes, make a video pause and write it down. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. Welcome to Kashyap's Academy. Dear students, in class 11 trigonometry, we are learning about factorization and defactorization formulas. And in this factorization and defactorization formula, we have the problem. Next problem is sin 2x plus sin 2y divided by sin 2x minus sin 2y is equal to tan of x plus y divided by tan of x minus y. So how will you solve this? Sin 2x plus sin 2y upon sin 2x minus sin 2y is our LHS, left hand side. By using this, we have now sin c plus sin d. We will use sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, means 2 sin 2x plus 2y by 2 into cos 2x minus 2y by 2 divided by sin c minus sin d 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. या फिर आप इसको पहले ले सकते हो, इसको बाद में, डिपेंड ऑन हाउ यू नो द फॉर्मूला. सो 2 sin of 2x minus 2y by 2 into cos of 2x plus 2y by 2, 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. So it will be 2 will be cancelled. Now sin of 2x plus 2y, 2 is common, 2x minus 2y, 2 is common, same in the denominator. So we get 2 cancel, sin of x plus y into cos of x minus y divided by sin of x minus y into cos of x plus y. अब ये दोनों sin of x plus y upon cos of x plus y will constitute tan of x plus y, and cos of x minus y upon sin of x minus y will constitute cot of x minus y. But cot of x minus y is nothing but 1 upon tan of x minus y. So finally we get tan of x plus y upon tan of x minus y. Yes, make a video pause and write it down. Now the next problem is sin 6x plus sin 4x minus sin 2x. Sin 6x plus sin 4x minus sin 2x is equal to 4 cos x into sin 2x into cos 3x. 4 cos x into sin 2x into cos 3x. अब अगर ये करना है, so what we need to do? We'll take LHS first of all. अब अगर हमने RHS की तरफ देखा, if we look for the RHS, we want 4 cos x, then sin 2x and cos 3x. तो कोई भी दो, you can use any two, sin 6x plus sin 4x, or you can use sin 6x minus sin 2x, or you can use sin 4x minus sin 2x, depends. But मैंने सोचा sin 2x we have the formula 2 sin x cos s, so we make the arrangement for sin 6x and sin 4x. sin c plus sin d
2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. So 2 sin 6x plus 4x, that is 10x by 2 into cos of 6x minus 4x, that is 2x by 2. So 2 sin 5x into cos x. ये 10x by 2 is 5x, 2x by 2 is x. So 2 sin x 2 sin 5x into cos x minus 2 sin x cos x. तो हमने 2 cos x कॉमन निकाला, in bracket sin 5x minus sin x, in bracket sin 5x minus sin x. So 2 cos x common, again sin c minus sin d, sin c minus sin d, 2 sin c minus d by 2 into cos c plus d by 2. So 2 cos x as it is, 2 sin 5x minus x by 2 into cos 5x plus x by 2. So 2 into 2 is 4, cos x as it is, sin 5x minus x, that is 4x by 2, that is sin 2x, and cos 5x plus x, 6x by 2, that is cos 3x. So it is finally 4 cos x sin 2x cos 3x. In this way we can solve this. Yes, make a video pause and write it down. So now we have the problem sin x minus sin 3x, sin x minus sin 3x plus sin 5x minus sin 7x upon cos x minus cos 3x minus cos 5x plus cos 7x is equal to cot 2x. We need to prove this is equal to cot 2x. तो अब हमने क्या किया है, हमें cot 2x चाहिए, मतलब we want cos 2x and sin 2x, c plus d c minus d. कुछ ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि जहाँ पे हमें 2x ऊपर मोस्टली cos 2x एंड नीचे मोस्टली sin 2x, बट विल फोकस ऑन 2x. तो x और 3x को भी हम x प्लस 3x जहाँ पे करेंगे, 4x जहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 2x आ सकता है. हियर ऑल्सो नीचे भी cos x माइनस cos 3x, वी कैन मेक सच अरेंजमेंट कि ये दोनों लिए, ये दोनों लिए, ये दोनों एंड ये दिस टू ऑल्सो पॉसिबल. बट व्हाट वी डिड, sin x प्लस sin 5x, क्योंकि मुझे ऊपर cos चाहिए था. सो आई वॉन्ट sin c प्लस sin d में 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2. x माइनस 3x में भी x माइनस 5x में भी मुझे मिल जाता है. सो वी मेक एन अरेंजमेंट कि जो प्लस दिखे मुझे पहले ऊपर वाले, सो वी मेक sin x प्लस sin 5x एंड माइनस कॉमन फॉर दिस sin 3x and sin 7x, minus in bracket sin 7x plus sin 3x divided by cos x minus cos 5x, ये वाला cos x, this cos 5x combiningly plus cos 7x पहले, then minus cos 3x. So we have an arrangement like this, sin x plus sin 5x minus sin 7x plus sin 3x divided by cos x minus cos 5x plus cos 7x minus cos 3x. So sin c plus sin d यहाँ पे 2 sin c plus d by 2 x plus 5x by 2 into cos of x minus 5x by 2 minus again sin c plus sin d 2 sin c plus d 7x plus 3x by 2 into cos 7x minus 3x by 2 divided by cos c minus cos d. Most probably I use the second formula, minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. So cos x minus cos 5x minus 2 sin x plus 5x by 2 into sin x minus 5x by 2. X plus 5x 6x, 6x by 2 3x, x minus 5x minus 4x by 2 minus 2x and cos c minus cos 2 again ये plus as it is minus 2 sin 7x plus 3x for 10x by 2 into sin 7x minus 3x c minus d by 2. तो अब अगर हम देखें x plus 5x 6x by 2 3x, x minus 5x minus 4x by 2 minus 2x minus as it is 2 sin 7 plus 3 10 by 2 5x into cos 2x एंड नीचे भी minus 2 sin x plus 5x जहाँ पे आता है 3x by 2 x minus 5x minus 4x by 2 that is minus 2x and here also 7x plus 3x and ये plus minus minus हो गया 7x plus 3x 10x by 2 that is 5x into sin 7x minus 3x 4x by 2 that is 2x. अब हमें ध्यान में रखना है cos of minus theta and cos of theta are not different. अगर cos के अंदर निगेटिव हो तो, बट sin of minus theta होगा तो minus will come outside and it will become minus sin theta. तो अब यहाँ पे जो cos of minus 2x है ये as it is cos 2x आएगा. Here also we have cos of 2x as it is cos 2x. Okay. Here sin of minus 2x, तो ये माइनस बाहर जाएगा, उस माइनस 2 को प्लस करेगा, इट विल बिकम प्लस 2 sin 3x sin 2x एंड ये माइनस एज इट इज sin 5x into sin 2x एज इट इज. सो अब अगर हम देखें 2 sin 3x cos 2x minus 2 sin 5x cos 2x, ऊपर और नीचे 2 cos 2x एंड नीचे 2 sin 2x कॉमन आएगा, रिमेनिंग इज sin 3x minus sin 5x, sin 3x minus sin 5x, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, cos 2x by sin 2x that is cot 2x. Yes, make a video pause and write it down.